Welcome to the series of video lectures on C programming language. In that we are discussing control structures. We have already discussed that there are three basic control structures: if statement, loops and switch case statement. In if statement we have already discussed if else and if else if structures. Now today's class we are going to discuss nested if else. First of all, we should see the syntax of nested if else, which is as follows. Let's say this is a block, this is continuous block, and if the first condition is there, and in that if the condition gets true, let's say these three statements are executing, and then these three statements will execute. Both are at the same level, and as soon as I shift from these three instructions to these three instructions, in between ऐसा हो सकता है कि एक कंडीशन आपको और मिल जाए. Let's say this is condition 2, and if it is if statement, then it will execute accordingly, that is if and else. Likewise. Okay, so this is the syntax of nested if else. Again, in this if block there is another if else block, and in this else block there will again be an if else block. So what is nested if else? When an if else is applied inside another if else statement, the combination is known as nested if else. So in the similar pattern, the else block, I can mention that this is a code block and this will execute if this condition 1 gets failed. We will be inside the else block, and in this else block ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए और उसके बाद ये तीन स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, बोथ आर एट द सेम लेवल. अब ऐसा हो सकता है कि जैसे ये तीन स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट किए, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ आने वाले थे उसके बीच में आपको फिर से एक कंडीशन मिली. लेट्स से दैट कंडीशन इज कंडीशन 3, और चूंकि ये इफ है तो उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ आई विल मेंशन इफ एल्स द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक and this will get closed. So this is how the nested if else syntax is actually written. I should change this. Let's say this is one. Now this is actually the general syntax to specify the nested if else block. Again I should repeat, what is nested? Nested means one inside another. That is, when an if else block is applied inside another if else block, the combination is known as nested if else. Now we should see the execution of that, and for again I should specify the block. That is, let's say this is A block statement, this is B block statement, this is C block statement, D block, E block, this is F block, G, H, I and J. Let's say these are the different blocks. Now we should see the execution of this nested if else. Now one thing you should keep in mind, this second condition is actually dependent upon the condition 1. Means this is known as outer if and this is known as inner if else. मैं दूसरी लैंग्वेज में भी बात करूं, मान लेते हैं यहां पर दो दरवाजे हैं. वन इज द आउटर वन, आउटर गेट, एंड दिस इज द इनर गेट. इफ द आउटर गेट इज क्लोज्ड, द इनर इज ऑटोमेटिकली बी अज्यूम्ड टू बी क्लोज्ड. यदि ये दरवाजा, बाहर का दरवाजा बंद है तो अंदर का दरवाजा अपने आप बंद माना जाएगा. यह सेम लॉजिक हम लोग यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं. अभी देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द एग्जीक्यूशन ओवर हियर. लेट्स से द कंडीशन 1 गेट्स ट्रू. व्हाट विल हैपन इफ द कंडीशन 1 गेट्स ट्रू? In all cases the block A will always execute, and block J will always execute. A and J, they are not bounded with any condition, so A and J will execute. Now let us say the condition 1 gets true. If the condition 1 gets true, obviously this block will execute and this else block will be skipped completely. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था
यदि ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, इफ स्टेटमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, तो उसका करस्पॉन्डिंग एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्किप कर दिया जाएगा. एंड नाउ यू आर अलाउड टू गो इनसाइड, मींस दिस block will execute if the condition 1 is true, and hence the block B and block E, the corresponding block E, will always execute, because the block B and E is dependent upon condition 1. So I will mention that after A the B block will execute and then E block will always execute. अब जैसे ही बी ब्लॉक एग्जीक्यूशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बी ब्लॉक एग्जीक्यूशन के बाद, इससे पहले कि मैं ई पर जाऊं, रास्ते में आपको एक कंडीशन मिलेगी, एंड दैट कंडीशन विल बी कंडीशन 2. सो हियर आई विल मेंशन कंडीशन 2, एंड लेट अस से कंडीशन 2 इज ट्रू, एंड देन the C block and D block is dependent upon condition 2, hence if the condition 2 is true, C will execute, but at the same time D will be skipped, and hence if the condition 2 is true, the C block will execute, D skip कर दिया जाएगा और उसके बाद E block execute होगा, जिसे हम already mention कर चुके हैं. This is how the nested if else will execute if condition 1 is true and condition 2 is also true. Take the second case. One more important thing, when condition 1 is true, we will never talk about this else block. Means condition 3 के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे. Why? Because this condition 3 is inside else block, which itself is the else part of the if block, which is related to condition 1, and hence else block will be skipped completely, और इसीलिए हम condition 3 के बारे में कोई बात नहीं करेंगे. Now the second case, मान लेते हैं कंडीशन 1 ट्रू है. लेट अस से कंडीशन 1 इज ट्रू एंड कंडीशन 2 इज फेल्ड. सो व्हाट विल हैपन नाउ? A block will always execute, and similar fashion the J block will always execute. चूंकि कंडीशन 1 ट्रू है, B ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और साथ में E ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा. This is all related to condition 1. Now, as the condition 2 is true, now the C block will be skipped completely and the D block will execute. Hence, after B, the D block will execute. And then, बाहर जब हम लोग आएंगे तो E block execute होगा और जब बाहर आएंगे तो J block execute होगा. This is the execution of when the condition 1 is true and condition 2 is failed. Now, let us take the condition 1 itself is fail. कंडीशन 1 ही फेल हो गई, हम लोग ऐसा मानते हैं. तो कंडीशन 1 यदि फेल है तो अब ध्यान से देखिए, if the condition 1 is failed, then this whole block will be skipped and then this else block will execute. This else block will execute. What will happen then? कंडीशन 1 के फेल होने के कारण फिर भी देखिए A ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा because it is not bounded with any condition. Similar fashion, the J block will always execute. कंडीशन 1 फेल होने के कारण ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, एल्स ब्लॉक में आएंगे और F ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, साथ में I ब्लॉक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा बिकॉज दे आर एट द सेम लेवल एंड डिपेंड अपॉन कंडीशन 1. सो यहां पर A के बाद F ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. F ब्लॉक यदि एग्जीक्यूट होता है उसके बाद I ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा बिकॉज F एंड I are at the same level. Now, condition 3 comes in picture and let's say condition 3 is true. What happens? Condition 3 यदि true है तो G block execute होगा, लेकिन उसी समय H block skip कर दिया जाएगा. तो यहां पर G block execute होगा क्योंकि condition 3 true मान ली गई. And this is how this will execute if condition 1 is fail and condition 3 is true. याद रहे जब कंडीशन 1 फेल है तो हमने कंडीशन 2 के बारे में कोई बात नहीं की बिकॉज दिस कंडीशन 2 इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन व्हेन द कंडीशन 1 गेट्स ट्रू. नाउ द लास्ट केस, इफ द कंडीशन 1 इज फेल्ड एंड कंडीशन 3 इज अगेन फेल, व्हाट विल हैपन देन? फिर से A ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, J ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा ही होगा. कंडीशन 1 के फेल होने के कारण ये ब्लॉक स्किप कर दिया जाएगा. आप यहां आएंगे और यहां आते ही सबसे पहले F ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा
और एफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के साथ साथ आई ब्लॉक भी हमेशा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जैसे ही मैं एफ से आगे बढ़ता हूं, आई की तरफ जाऊंगा, रास्ते में कंडीशन 3 मिलेगी जो कि फेल्ड है, और इसके कारण जी ब्लॉक स्किप हो जाएगा और एच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दिस इज हाउ द नेस्टेड इफ एल्स एग्जीक्यूट्स इन डिफरेंट केसेस। यहां आप ध्यान दीजिए, जब कंडीशन 1 ट्रू है तो हम कंडीशन 3 के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज कंडीशन 1 इज ट्रू। इफ द कंडीशन 1 इज ट्रू, दिस ब्लॉक विल बी स्किप्ड कंप्लीटली, जहां पर कंडीशन 3 लिखी है, इसलिए कंडीशन 3 के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। ऑन द अदर हैंड, जब कंडीशन 1 फेल होगी, जैसे कि यहां मेंशन्ड है, उस केस में कंडीशन 2 के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। व्हाई? बिकॉज एक्चुअली दिस इज डिपेंडेंट अपॉन दिस एंड दिस इज फेल्ड, और इसलिए इस ब्लॉक को ब्लॉक कर दिया जाएगा और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसमें कि कंडीशन 3 अवेलेबल है, इसलिए हम लोग कंडीशन 3 के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ दिस इज द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। नॉट नेसेसरीली all the blocks will be available at each instance। मैं यहां पर कुछ कोड ब्लॉक्स को हटाने की कोशिश करता हूं और फिर देखते हैं। यदि मैं ये जे ब्लॉक हटाता हूं तब भी ये नेस्टेड इफ एल्स होगा। ए ब्लॉक यदि मैं यहां से हटाता हूं तब भी ये नेस्टेड इफ एल्स होगा। व्हाई? बिकॉज वन इफ एल्स इज अप्लाइड इनसाइड अनदर इफ एल्स। इफ दिस आई ब्लॉक इज नॉट अवेलेबल, again this will be nested if else. If this e block is not available, it will again be nested if else, and so on। यदि मैं f हटाता हूं तब भी ये नेस्टेड इफ एल्स है, b हटाते हैं तब भी ये नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा, अभी भी एक इफ के अंदर इफ एल्स है, एंड सो ऑन। इस तरीके से मान लेते हैं मैंने यहां से ये एल्स ब्लॉक हटा दिया तब भी ये नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा, ये एल्स ब्लॉक हटा दिया तब भी ये नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा। व्हाई? बिकॉज इफ के अंदर एक इफ है और एल्स के अंदर एक इफ है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि इफ कैन बी अप्लाइड विदाउट एल्स, बट इफ देयर इज एन एल्स ब्लॉक देयर मस्ट एग्जिस्ट द करस्पॉन्डिंग इफ ब्लॉक। एल्स ब्लॉक इफ के बगैर नहीं लिखा जा सकता, इफ एल्स के बगैर लिखा जा सकता है। एंड लास्टली, इफ आई रिमूव दिस कंडीशन 2, दिस इज अगेन नेस्टेड इफ एल्स। व्हाई? बिकॉज इनसाइड इफ देयर इज अ ब्लॉक, बट इन एल्स देयर इज एन इफ कंडीशन। बट इफ नाउ आई remove this block, now this will turn to simple if else। So this is all about the nested if else syntax. Now we should discuss the example based on that। Let us take the same example when we want to check whether the given number is positive, negative or 0. First of all, whether it is possible to apply the nested if else for checking the positive, negative and 0, ये हम लोग कैसे बात कर सकते हैं? तो उसे समझने के लिए now we will take the mathematical one। Take any condition first of all. Let's say we assume that we will check whether the number is positive or not. Take a single condition. If the number is positive, well and good. But if not, then what will happen? Now this is if else, if else, if else. So if this is if, this will be else, and this else part, if this if part is positive, then this else part will be either negative or 0. There will be two conditions. Now we will extend this to check the independent or individual condition, and now out of this two we will check for negative, and then if it is negative then obviously this will represent 0. So this is nested if else. Why nested if else? This is outer if else, and for this else there is again an inner if else, and that's how we can apply the nested if else over here. So what will be the program for that? So let's say hash include stdio.h. We are going for the program that if a number is entered by user, write a program to check whether the given number is positive, negative or 0. Okay, so void main, and now take an integer variable, let's say num, ask the user for the number, let's say CLR SCR, and then ask
for the user, ask the user to enter the number. So I'll display a message, printf enter a number. Now scan it. As it is an integer variable, चूंकि integer variable है, format specifier %d होगा, ampersand of num, वो number आ गया जिसे कि मुझे check करना है. Assuming that this is the variable num, any value will be there. First of all, check for the positive. You can check for negative also. You can check for 0 also. Any condition we will take. हमारे इस example के हिसाब से first of all we will check whether whatever is number, if it is greater than 0, means the number will be positive. So display printf %d is positive. So here num variable will be displayed. This is close. Now this is representing this case. Now it's else part. Else. यदि मैंने यहाँ पर else लिखा है तो this else is representing positive part. So this else will represent negative. This else will represent negative and 0 part. Now I will check the negative one. So inner if block will be opened. So I will check यदि if जो भी num है, if it is less than 0, then in that case the number will be negative. So %d is negative and the variable num will be displayed. और अब यदि ये if है और ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका एल्स पार्ट ऑटोमेटिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को. सो आई विल मेंशन हियर द एल्स ब्लॉक एंड विल राइट printf %d is 0. And now this is the complete program. So get ch and close. So here we can apply or we have applied the nested if else block. हमने पॉजिटिव के लिए if कंडीशन लगाई, उसका else पार्ट ऑटोमेटिकली या तो नेगेटिव या 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने नेगेटिव चेक कर लिया. यदि नेगेटिव नहीं है तो वो 0 तो होगा ही होगा. So this is the example for the nested if else. Now we will take another example which will be very similar to the general structure we have mentioned for the syntax of nested if else. Let us say, for example, we are given with a year and we have to check whether the given year is leap year or not. So we want to write a program which checks whether the given year is leap year or not. Now how will I check whether the given year is leap year or not? कैसे check करते हैं leap year? Normal cases में हमें पता होता है कि if the year is completely divisible by 4, the year will be leap year. Otherwise not. But this is not so. This is not the complete definition of your leap year. So what is basically your how you check whether the year is leap year? So we will take some example of the years. According to the rule of divisible by 4, if we talk about the century years, let's say the year is 2000. It is completely divisible by 4, इसलिए ये leap year होगा. So मैं यहाँ पर leap year के examples लिख देता हूँ. 1600 is again divisible by 4. It will be the leap year. Let's say 1200 is century year. It will be leap year. 1300, 1500, all are the century years and all are divisible by 4. We are taking for divisibility of 4. So all will be the leap year, but this is not the case. This 1300 and 1500, though they are completely divisible by 4, but they are not leap years. They are not leap years. They are the examples. And if we take about the example of non-century year, then for leap year we will get the example. Let's say 1996. It is divisible by 4 and hence it is leap year. 2004, it is divisible by 4, hence it is leap year. And for non-leap year, let's say 13,065, it is not completely divisible by 4, hence it is not leap year. So using these examples,
we come to the decision that the divisibility by 4, the complete divisibility by 4 is applicable for the non-century years. It is correct for non-century years. But if we talk about the century years, the rule gets failed. Then ये रूल फेल कब होता है? जब सेंचुरी ईयर्स होते हैं, उस केस में कभी ये लीप ईयर सही बताता है और कभी ये नॉन लीप ईयर होगा. तो उस केस में हमारा सही रूल ये कहता है कि जब सेंचुरी ईयर्स होते हैं, उस केस में आपको 4 के बजाय 400 से चेक करना होगा. All these years are completely divisible by 400, so these are the leap years. But these years are not completely divisible by 400, so these will be non-leap year. So what is the rule now? I'll draw that. Now first of all, I'll have to check whether the year is century year or not. So let's say this is the diagram to represent that. First of all, we'll check whether the year is century or not. So let's say this is representing century, so this will represent non-century. Both are century. In that case, further for leap year, we have to check the divisibility by 400. So if it is completely divisible by 400, this will be leap year. And if it is not completely divisible by 4, this will be non-leap year. I will change it to P, let's say, for example. In the similar fashion, for non-century year, I'll have to just check for the divisibility of 4. तो यहाँ पर चेक करते हैं. नॉन सेंचुरी ईयर यदि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर. और यदि नहीं तो वो क्या होगा? नॉन लीप ईयर. So this will be the structure for checking this. So now according to that, this is outer if else, and for this if, this is inner if else. This is if else. If else, if else. Then in this else block there is again an if else block, that is if else. Now accordingly we will apply that. So writing the program, let us take here, this will be hash include stdio.h and then hash include conio.h. Now first we will require the variable named as year, starting with void main. Let's say take the variable as year. Now after clr scr, get the value of the year. So I will flash a message printf enter any year. Scan it. So let's say scanf, as it is an integer variable, I'll scan and store it into the variable year. So the year value will be entered. Now first of all we will have to check century and non-century. How will you check whether the year is century year? If the year is completely divisible by 100, then the year will be century year. And this is the case of century and this is the case of non-century. So I'll apply if whatever the value of year variable is there, and if I mod it by 100 and the remainder is equal to 0, means it is completely divisible by 100. And in that case, this will be the block for the century and this will be block for the non-century years. So this is representing century, that is this part, and this is representing, this else part is representing this non-century. Now further, in century year, to check whether this century year is leap or not, we have to divide it by 400 and that to be complete division. So I will extend this. Now if year mod 400 is completely divisible by 0, then I may say that the year is, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैसेज, year %d is leap and
substituting the value of variable year over here, this will display the answer, and its else part will represent that the given year is, though it is century, but it is non-century. So I will write not leap, like that. This is the block. Now, this is when the year is century. This part when the year is non-century. In that case, for non-century we have to divide it by 4, and that to be complete division. So I'll check if the year is non-century and it is completely divisible by 4, that is mod by 4 is equal to 0, then I'll display the message, that is printf year %d is leap, and print the content of variable year, and if not, else it will represent, so this is not a leap year. So printf year %d is not leap. That's it. So this if will be closed, this else is closed, get ch, and this program will get closed. So this is actually representing the ideal structure of nested if else, where in this is the ideal structure. This is outer if. In this outer if there is inner if else. This is outer else, and this outer else there is again an if else statement. Okay. So this is all about the nested if else statement. Please do like, share and comment. Subscribe my video channel for the lectures on programming languages. Don't forget to press the bell icon. Thank you.